Hello dear friends, welcome back to Power System class. In previous lectures, we visited concentrating solar collectors and its types. Then we discussed basics of solar photovoltaic system, and we also discussed about working and construction of the same. Today we are going to discuss different types of photovoltaic power plants, and we are also going to discuss the characteristics of solar cell, and we will try to end the chapter by discussing various application and merits demerits of the solar power plant. Okay, so starting with different types of solar photovoltaic or PV power plants. So first in the sequence is grid connected power system, solar system. So here in the picture you can see this is grid connected solar photovoltaic system. Now the grid is tied up with the grid tie inverter and converts the DC output of solar panel to grid level AC, and the this AC output is synchronized with grid supply at the voltage and frequency of the grid, so that we can maintain power quality. So that मतलब समझो कि आगे अगर जो मेरा ग्रिड है इट इज़ वर्किंग ऑन 230 volts and 50 hertz. So you have to match that voltage level and frequency. Okay, so how does it works, how does this plant works? Firstly, what will happen, the the solar here are solar photovoltaic panels or modules. We have discussed about that before. It will absorb the sun's radiation and produce DC current, DC electricity. This electricity is sent to but the electricity generated by this modules will be non-uniform electricity, right? So it will be sent to charge controller. What does charge controller does? We have discussed it in previous lecture. It it prevents the overcharging and under discharging of my battery. Okay, and also it will make this upcoming non-uniform DC into uniform DC, and we will save our surplus power in the battery. Okay, but before that, what will happen, this this uh, this DC output from charge controller will go into DC to AC inverter. In that, it will convert my DC electricity into AC, and it is connected to the AC circuit breaker box. This circuit breaker box will, what does it does, it disconnects the supply with the help of this isolation switch whenever the fault occurs. Okay, and then from this circuit breaker, it will go to our grid. Okay, and uh, circuit breaker will not operate in normal condition, it will only operate in the condition of fault. Okay, and after sending all the energy here to the grid, we can save the remaining surplus power to my battery. Okay, and all these components, इन्वर्टर हो गया आपका, जो आपका ये सर्किट ब्रेकर हो गया, जो फ्यूजेस आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, स्विचेस यूज़ कर रहे हो, वॉट एवर यू आर यूजिंग, their rating should be considered while picking them. Then we should also take care of
the size and safety norms, right? So this was our grid connected solar PV system. Now, what do you find interesting in it? It is very simple system, right? There are no so many complex phenomena going on over here. तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो सिंपल है और रिलेटिवली लो ऑपरेटिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बिकॉज इसके अंदर कोई वियर एंड टीयर कोई डिवाइसेस है नहीं, तो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो कम रहेगा। एंड जैसा सभी ही सोलर मॉड्यूल्स में होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जो होता है उसको वो रिड्यूस करने में हेल्प करता है, राइट? बिकॉज यू आर प्रोड्यूसिंग एनर्जी ऑन योर ओन and you are consuming it by yourself, and even you are sending the surplus energy back to the grid, so it reduces electricity bill. And it incorporates incorporation of batteries into grid connected system and provides uninterrupted power supply to critical load. So जब AC grid में अगर कोई fault हो गया, it gets disconnected from your system, even then you get to use uninterrupted power supply, because you have a battery, and power is stored in the battery, and you can utilize it by the time when the fault occurs, right? So these were the advantages of my grid connected solar photovoltaic system. Now jumping to standalone solar system, it's even simpler than the first one, right? You can see it in the figure, like it is a little bit similar to what we seen in previous lecture. So what happens here so here this solar PV module, it will absorb radiation from the sun and will generate DC electricity. This DC non-uniform electricity will be sent to charge controller. Charge controller will make this energy uniform and supply it to inverter for the AC conversion, और एक बार AC कन्वर्जन होने के बाद वी विल फीड इट टू द लोड। और चार्ज कंट्रोलर का दूसरा काम क्या है कि वो क्या करेगा, बैटरी स्टोरेज में भी वो सप्लाई सेंड करेगा, राइट? सो दिस वाज स्टैंडअलोन सोलर सिस्टम, वेरी सिंपल, you just have to write whatever it is in the diagram, right? So this was standalone solar system. Now coming to the characteristics of solar cell. So here this graph you can see, my friends, it is nothing but VI characteristics. Okay, VI characteristics of my PV module. On the x-axis you can see voltage, on y-axis you can see the current. This VOC, what is it? It is open circuit voltage. ISC is short circuit current. This IM is nothing but maximum current, and VM is maximum voltage. And when we get maximum current and maximum voltage, what do we get? We get maximum power. So maximum power is generated when current is produced maximum and voltage is obtained maximum. Okay, it is at here at PM, which is at a band point. Okay, when this curve is getting bended, so maximum power gets generated at this point. Then coming to discuss the efficiency of my cell, what what is the normal formula of efficiency? That is maximum output by input. So here it will be a little bit same, it will be maximum electrical power output divided by radiation power input. Okay, सो नॉर्मली जो हमारे सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनकी जो एफिशिएंसी होती है, इट इज़ वेरी वेरी पुअर, लाइक दे आर वो 10% के अराउंड भी नहीं होती है। 10% इज ऑल्सो आई एम सेइंग टू मच, इट इज़ अराउंड लाइक 3 to 5 मैक्स टू मैक्स। ओके, सो
Solar inverter converts DC power to AC power by performing MPPT process, and it samples the output power from solar cell and applies proper load resistance to obtain maximum power. और सोलर मॉड्यूल में मटेरियल क्या यूज़ होते हैं, वी हैव डिस्कस्ड दिस इन प्रीवियस लेक्चर. सिलिकॉन क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं और साथ साथ में थिन फिल्म टेक्नोलॉजी यूज़ होती है. ठीक है, थिन फिल्म टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस माई सोलर सेल्स. उसके ऊपर का जो लेयर रहता है टू प्रोड्यूस दैट. नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द solar power plants with its imagery or with its block diagrams. बेसिकली ज़्यादातर जितने भी हैं उनका फंडामेंटल तो सेम ही है. यू विल फाइंड सेम प्रोसेस अकरिंग, just additional one or two stages here and there, but remaining processes are same. So let me explain this figure, which is solar power plant using array or flat plate collectors. Okay, now if you remember flat plate collector, we studied it to previous lecture. So let's discuss this plant in detail. Let me take a marker. Here you go. So what will happen, there is a pump placed over here, and what will this pump do? It will supply this cold water into flat plate collector array. और फ्लैट प्लेट कलेक्टर पे क्या हो रहा है, इट इज़ रिसीविंग सोलर रेडिएशन और ये जो कोल्ड वाटर को है वो हॉट वाटर में कन्वर्ट कर दे रहा है. ठीक है, और हॉट वाटर में कन्वर्ट करने के बाद वेयर इज़ दिस हॉट वाटर गोइंग, इट इज़ गोइंग टॉवर्ड्स हीट एक्सचेंजर या फिर बोलो तो ब्यूटेन बॉयलर. एंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन ब्यूटेन बॉयलर, जो हमारा हॉट वाटर था उसको वो स्टीम में कन्वर्ट कर रहा है. ठीक है, और स्टीम में कन्वर्ट करने के बाद वो स्टीम को हम लोग कहाँ भेज रहे हैं, टरबाइन में भेज रहे हैं, और उस स्टीम से टरबाइन विल रोटेट. नाउ जो टरबाइन में हम जो स्टीम भेज रहे हैं उसे टरबाइन जब रोटेट करेगा तो टरबाइन इज कपल्ड विथ जनरेटर, एंड बिकॉज of the rotation of turbine, the generator will also start rotating, and because of that electrical energy will be produced. Now जो स्टीम के बारे में मैंने बताया था कि जो स्टीम को स्टीम जो है जो टरबाइन को रोटेट कर रही है, so where that steam will go, it will go to कंडेंसर. जो हॉट स्टीम है, हॉट वाटर है, वो वापस कहाँ होगा, कोल्ड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, and it gets feeded to the boiler again via feed pump, and this way cycle will continue. Okay, अब इस प्लांट की कैपेसिटी कितनी होती है, एफिशिएंसी कितनी होती है, barely 2 to 3% ओनली. सो सोलर पावर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो एफिशिएंसी का होता है कि we barely gets to convert the photons into electricity, very less. Okay, now coming towards our next power plant, which is solar pond electrical power plant. Okay, इसमें क्या होता है, there is a pond. Okay, and pond is filled with brine. ब्रेन क्या होता है, ब्रेन और ब्राइन, व्हाट इज इट, इट इज़ नथिंग बट सॉल्ट वाटर. ओके, वेरी मच कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट वाटर. सो यहाँ पे क्या होता है, पॉन्ड में जो कुछ भी सोलर एनर्जी जो अब्जॉर्ब होती है, इट गेट्स कलेक्टेड बाय ब्रेन सॉल्यूशन. ओके, और जो ये जो ब्रेन है वो क्या कहाँ जाती है, वो जाती है, जी हॉट ब्रेन है वो जाती है सोलर पॉन्ड में. सोलर पॉन्ड में से हीटअप होके बॉयलर में. ओके, सो ये जो ब्राइन है वो कहाँ जाती है, बॉयलर में जाती है, और वहाँ बॉयलर के अंदर जो वर्किंग सब्सटेंस होता है उसको वो हीटअप कर देती है.
और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो हमारा जो स्टीम है वो टरबाइन को रोटेट करता है और टरबाइन जनरेटर को रोटेट करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। एंड इसकी भी जो एफिशिएंसी है वो बहुत ही कम है। नाउ द थर्ड पावर प्लांट यूजिंग कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर्स। सो इसमें क्या होगा, फर्स्टली अभी जो पहले पहले सबसे पहले हमने जो प्लांट देखा उसमें what was happening, we were using flat plate collectors. Here we will be using concentrated collectors. Okay, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सोलर रेडिएशन जो है वो कलेक्ट होता है with the use of concentrated collectors. What concentrated collectors do, they store the hot water from collectors. जो कलेक्टर से जो हॉट वाटर था वो स्टोरेज टैंक में वो क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। और ये जो स्टोरेज टैंक है वो क्या करता है, स्टीम बॉयलर को वो स्टीम बॉयलर को इनपुट देता है। और जो हाई प्रेशर स्टीम जो है बॉयलर के अंदर वो टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन अगेन इट इज़ मैकेनिकल कपल्ड विथ माई जनरेटर एंड it turbine rotates generator and electricity is produced. So fundamentally जो concept जो मेन है वो तीनों में सेम ही है, अब तक आपको पता चल चुका होगा। it is they are not doing anything new, we are having one small different stage added over here or there, like यहाँ पे आपको storage tank दिखा, उसके पहले आपको pond दिख गया, you saw brine, right? So we are getting one or two additional stages, nothing more than that. So coming to our last plant which we have seen before as well, central tower या फिर तो power tower using heliostats, we used to call them mirror in previous lecture when we seen। ये जो ऊपर का स्ट्रक्चर था वो तो हमने पिछले लेक्चर में ही देख लिया था, ठीक है। सो मिरर्स को इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ताकि जो रेडिएशन है वो जो मेरा सेंट्रल टावर है, पावर टावर है, उस पर कॉन्सेंट्रेट हो। पावर टावर में जो लिक्विड रखा होता है वो लिक्विड इस रेडिएशन की वजह से हीटअप होता है एंड इट गेट्स इनटू अ टरबाइन, इट रोटेट्स टरबाइन एंड टरबाइन रोटेट्स generator which is coupled with it। Okay, so nothing new happening here as well, same process is getting continued। Okay, यहाँ पे जो आपको ये कंडेंसर दिख रहा है, कंडेंसर क्या करता है, वो जो है स्टीम को कूल ऑफ कर देता है और वापस से वो बॉयलर में ही भेज देता है। कंडेंसर वी हैव सीन इन फर्स्ट वन एंड फर्स्ट प्लांट एंड सेकंड प्लांट एज वेल, ठीक है। सो दिस इज इट्स operation। Okay, now there are advantages, disadvantages, applications of these plants, we discuss that, but particularly about this plant central tower plant। Okay, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। वाई, बिकॉज यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ होल टावर, और पूरा जो टावर है उसको कंस्ट्रक्ट करने में कॉस्ट तो आपको लगने ही वाला है। ओके, प्लस ये टावर का कंस्ट्रक्शन भी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, और ऊपर से इतनी कॉम्प्लिकेशंस के बाद भी आपको बहुत ज़्यादा प्लांट कैपेसिटी नहीं मिलती। इट कैन प्रोड्यूस अराउंड 10 मेगावाट्स ओनली। ओके, एक्सेप्ट इन फॉरेन देर आर plants which are also producing around 50 megawatts, but at over here we are only able to produce 10 megawatts। Okay, only major advantage of this plant is we can get the temperature up to 7000 degrees Celsius। Now discussing the advantages of my solar PV systems। सबसे पहले तो सोलर एनर्जी बिल्कुल फ्री है, उसके लिए कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई फ्यूल की अगर आपको ज़रूरत नहीं है दैट मीन्स ये एकदम क्लीन एनर्जी है, बिकॉज कोई साइड प्रोडक्ट आपको नहीं मिल रहा है। ओके,
कोई फ्यूल अगर कोई फ्यूल बर्न ही नहीं हो रहा है तो आपको साइड प्रोडक्ट भी नहीं मिलेगा। उस इट इज़ लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ रिलायबल, मेंटेनेंस आसान है। यू कैन जस्टिफाई ऑल दिस पॉइंट्स, राइट। इजी टू फैब्रिकेट, कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है। अभी तक हमने जितने भी देखे कहीं पे भी मूविंग पार्ट्स नहीं थे। विंड में अगर आप देखते तो विंड में आपको मिल रहे थे कि जो गियर्स वगैरह हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कहीं कोई मूविंग पार्ट नहीं मिलेगा। ओके, बहुत ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए, ज़्यादा सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन उसका लंबे टाइम तक चलता रहता है, सोलर सेल का फंक्शन लंबे टाइम तक चलता रहता है, राइट। और ये डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट कर रहा है टेम्परेचर में, पॉल्यूशन नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसको स्टार्ट करने के लिए पहले कोई प्रायर टाइम नहीं चाहिए। जैसे आपको अगर थर्मल पावर प्लांट स्टार्ट करना है तो देयर विल बी स्टार्टिंग स्टेजेस जब आपको कोई इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग में कोई एनर्जी नहीं जनरेट होगी। सो दैट्स नॉट द केस विद सोलर। ओके, देन मॉड्यूल का जो डिज़ाइन है दैट इज़ वेरी कन्वीनियंट। वोल्टेज एंड पावर आउटपुट कैन बी मैनिपुलेटेड बाय इंटीग्रेशन। यू यूज MPPT to track the location of sun। ओके, हाईएस्ट पावर टू वेट रेशियो मिल जाता है स्पेस एप्लीकेशंस के लिए, राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द लिमिटेशंस। सबसे पहला और सबसे बड़ा लिमिटेशन सोलर का है एफिशिएंसी। इट इज़ वेरी लो, बिकॉज ऑफ दैट वी आर उसका जो एप्लीकेशन है वो बढ़ रहा है, बट इतना इतना ज़्यादा भी नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। प्लस स्टोरेज बैटरीज की ज़रूरत होती है आपको पावर स्टोर करने के लिए। इफ़ यू आर sending to the grid, then it's well and good. If you want to use it domestically, you will need batteries। ओके, स्पेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्पेस चाहिए। स्पेशली कौन से प्लांट्स के लिए, जिसमें हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड कलेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट जो है वो महंगा पड़ता है। ओके, इवन दो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग सब्सिडीज इन ऑल, बट कॉस्ट इफ़ वी रिमूव दैट, कॉस्ट जो है वो ज़्यादा होता है, इट इज़ एक्सपेंसिव। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है वो अलग से होता है, मतलब वो भी ज़्यादा होता है, ठीक है। प्लस सोलर सेल का मैन्युफैक्चराइजेशन प्रोडक्शन इतना आसान नहीं होता है, इट रिक्वायर्स टाइम। नाउ कमिंग टू डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस। तो आपको सभी जगह, बहुत ही जगह पे एप्लीकेशन दिख जाएगा सोलर का, बहुत ही सभी जगह पे ऑलमोस्ट आपको दिख जाएगा। टेलीकम्युनिकेशंस में देख लो, डोमेस्टिक एप्लीकेशन देख लो, लाइटिंग में देख लो, स्ट्रीट लाइट्स में देख लो, आपकी जो पॉकेट वॉचेस होती है, कैलकुलेटर्स होते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन के सेल आते हैं, वो हो गए। विद दैट जो हमारे रेडियो या टीवी सेट्स हो गए, उसके अंदर आप यूज़ कर सकते हो। छोटे छोटे रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कई जगहों पे पानी के लिए, इरिगेशन के लिए, उसके लिए भी जा रहा है, ठीक है। रेलवे के सिग्नलिंग के लिए, ट्रैफिक सिग्नलिंग के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज़ होता है सोलर। वी हैव सीन जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, राइट। फार्म हाउसेस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, मतलब कमर्शियल एरिया में भी, ठीक है। बड़ी जो हाउसिंग स्कीम होती है वहाँ पे भी। सो इट इज़ नॉट प्लान दैट इज़ ऑप्शन जो आप सिर्फ उसको ही यूज़ करें। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल हाइड्रो पावर प्लांट के जैसा है या थर्मल पावर प्लांट के जैसा है कि आप कंप्लीटली यू विल रिलाई ऑन इट। बट हाइड्रो प्लांट के साथ साथ, थर्मल प्लांट के साथ साथ, यू ऑल्सो इंस्टॉल योर PV modules, so you can use it when you require as per your applications, right। ग्रिड सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए भी यूज़ होता है। देखो, कनेक्शन इन द ग्रिड सिस्टम टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी। सो enormous amount of application is there for solar energy, solar power, and we will discover even more various applications in future. But these were the applications. Now we will finish our lecture right here,
And this chapter also ends here. From the next lecture we will be starting a new chapter, so we will keep this lecture till here. I will be seeing you in the next lecture with a very new chapter. So till then, bye bye, take care everyone, thank you for listening.